Okay. I hope the screen is visible to all of you. If not, please let me know. Okay. Yes, ma'am. All clear, ma'am. Okay, guys. So, good evening to all of you. I hope each and every one of you is doing fine. ठीक है, सो जल्दी से शुरुआत करते हैं एक और सेशन की। एसएसबी क्रैक एग्जाम में सीडीएस पॉइंट 2023 इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो चुकी है एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज गोना बी ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, जिसके हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यू। ठीक है, और आज है हम लोग की क्लास 1। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू गाइस, जल्दी से वी विल हैव अ लुक एट द टाइम टेबल फॉर टुडे। So today is 2nd of March. So we started off with Prateek sir's class of daily current affairs. Followed by that we had Divyanshu sir's class of daily defense updates. ठीक है? हम्म उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से साइमल्टेनियसली देयर वाज दृष्टि मैम्स क्लास ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ ओआईआर एंड प्रैक्टिस, एंड उसके बाद 1 बजे थी अनुराधा मैम की क्लास। ओके, so now if we have to talk about CDS का slot, so you guys start off with Satyam sir's class at 4, मैथ्स का क्लास आपका होता है। उसके बाद 5:30 पे आप लोगों का हुआ शुभ्रा मैम का क्लास ऑफ फिजिक्स, क्लास 1 था आज आप लोगों का। और आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं विच इज गोना बी ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, जिसका है क्लास 1। So guys, when it comes to ordering of words, if we have a quick look at the analysis of previous year, you all can see right here कि किस तरीके से आप लोगों को हर साल क्या आए हैं। Like if I have to talk about 2018 या 2019, so all of you can see कि यहाँ पे 20 questions आए, यहाँ पे 13 questions आए, राइट। बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से आपको क्या क्या आए हैं। 10 questions आ रहे हैं, so it has basically come down to 10, so we can expect 10 questions, right? So when we talk about topic importance, the questions are not usually that easy when it comes to CDS. आपके question vary ही करते हैं moderate to advanced level of difficulty. So what do they do is they basically jumble the word, है ना। within a question itself वो लोग क्या कर देंगे, उन वर्ड्स को बिल्कुल ही जम्बल कर देंगे। ठीक है, एंड यू आर सपोज टू प्रॉपरली अरेंज देम इन अ लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, आप उसको क्या करोगे, लॉजिकल ऑर्डर में प्लेस करोगे एक सेंटेंस में। ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सको, उसको मीनिंगफुल बना सको। ठीक है, सो क्वेश्चन नीड इंटरमीडिएट टू एडवांस रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स जो हैं आपको रिक्वायर्ड होंगे। सो आपको क्या करना रहेगा, बेसिकली वो जो पूरे वर्ड्स है उनको इस तरीके से अरेंज करना रहेगा जिससे कि आप क्या कर सके, उनको लॉजिकली प्लेस कर सके, बेसिकली वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। So when it comes to concept, guys, what we need to know is first of all हम लोगों को ये पता रहना चाहिए because it is ordering of words, right? So जब हम ordering of words की बात करते हैं, so we need to know, ठीक है, कि किस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एक सेंटेंस में, राइट। तो स्ट्रक्चर यूजुअली, लाइक इफ आई हैव टू कीप इट वेरी बेसिक, है ना, तो सब यूजुअली आपका जो एक सेंटेंस होता है उसमें काफी सारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, है ना। सो लाइक अगर हम लेकिन स्ट्रक्चर की बात करें तो यूजुअली वी स्टार्ट ऑफ विद अ सब्जेक्ट, है ना, followed by that we have a verb, and followed by that we have an object। ठीक, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो आपका सेंटेंस रहता है वो बनता है। ठीक है, सो सब्जेक्ट आपका यूजुअली क्या रहता है, बेसिकली द पर्सन हु इज डूइंग समथिंग, है ना। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट कैन आइदर बी समथिंग, यू नो, यूजुअली हम उसको क्या बोलते हैं, जो किसी चीज का डूअर है, या फिर जो किसी चीज का डूअर है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं जो यू नो व्हाट डू यू कॉल इट, किसी चीज में, लाइक इफ यू आर फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि सबसे पहले आप फोकस करो कि आइदर यू फाइंड द ऑब्जेक्ट और द सब्जेक्ट। यूजुअली आई गेस इट्स, यू नो, इट्स बेटर इफ यू फाइंड द सब्जेक्ट इटसेल्फ, नहीं तो आप ऑब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करो।
ठीक है। सो पर्टिकुलरली अगर आपने सब्जेक्ट को किसी भी सेंटेंस में जल्दी ढूंढ लिया, सो इट्स ऑब्वियसली बेटर वहां से आप यू कैन जस्ट कनेक्ट द डॉट्स एंड आप पूरा सेंटेंस अच्छे से बना सकते हो। ठीक है। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू फाइंड द फोकस ऑफ अ सेंटेंस और द डूअर और वट एवर व्हाट इज बीइंग बेसिकली टॉक्ड अबाउट इन अ सेंटेंस। ठीक है। उसके बाद यूजली जो भी आपके सेंटेंस में रहता है, नहीं, डूअर का मतलब होता है किसी काम का कर्ता। ठीक है। सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट इट, इफ आई से दैट जैसे कि मैं बोलूं ओमकार किक्ड। ठीक है, किक्ड द बॉल, है ना। सो दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल जस्ट टू एक्सप्लेन। तो यहाँ पे हम लोग किक जो है, it's a verb, right? So who is doing the verb of kicking? Omkar is doing. So you became the doer. Basically, you become the karta of this particular verb, na? So that's what I'm talking about. हाँ, ओमकार is reading, ओमकार is playing. कौन कर रहा है? ओमकार ही तो कर रहा है सारे जो verbs हैं, है ना। सो इट्स ऑलवेज बेटर, क्योंकि यूजुअली जो आपको क्वेश्चन आएंगे इट्स नॉट पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन कि कोई कुछ कर ही रहा है। मतलब ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन क्या कर रहा है, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस आते थे आर बेस्ड ऑन कि किस चीज पे फोकस किया गया। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू फाइंड द सब्जेक्ट कि व्हाट इज बीइंग फोकस थ्रू आउट, किस चीज के बारे में बात हो रही है। देन यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट द डॉट्स, राइट। देन यू विल हैव अ सब्जेक्ट, देन यू विल हैव अ वर्ब, वर्ब इज नथिंग बट एन एक्शन वर्ड, एंड देन यू कैन डेफिनेटली फाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यूजुअली वही होता है जिसके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है, और बेसिकली वी कैन ऑल्सो से लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन इन द पर्टिकुलर सेंटेंस। ठीक है। सो ये आपको चीजों का ध्यान रखना है। उसके आगे पीछे आपके एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लाइक वी कैन ऐड एनीथिंग, है ना, उसको थोड़ा और मीनिंगफुल बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांस लेवल है, तो आपको कुछ भी ऐड करके दे सकते हैं। बट यू नेसेसरली फोकस, ट्राई टू फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस सो दैट यू कैन जस्ट फॉलो विद अदर पार्ट्स की क्या क्या उसमें हो सकता है। तो आप उसके बाद क्या कर सकते हो, आप बस बेसिकली ऑप्शन को देखो। मतलब आप अपना ट्रिक भी देख सकते हो। इफ यू फाइंड द सब्जेक्ट, तो आप ऑप्शन में देखो कि अच्छा ये दो ऑप्शन है। यूजुअली दो ऑप्शन होते हैं जिसमें कॉमन आपको लगेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे आगे ऑप्शन को देखते जाते हो, तो आपको पता चलता जाता है कि नहीं नहीं, ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है मेरे को, तो आई विल गो विद दिस वन। सो इफ यू थिंक दैट इट्स मीनिंगफुल, सो यू कैन जस्ट गो विद दैट ऑप्शन, है ना। सो उस तरीके से हम उस चीज को कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो रही बात कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। एनीवन हैज एनी डाउट राइट नाउ बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस नाउ? मैम कई बार लगता है कि दो चीज में सब्जेक्ट है, फिर उसमें कैसे सॉल्व करेंगे मैम? ठीक है, फिर क्वेश्चंस करके देखते हो ओमकार। आप मुझे बताना, आपको उसमें भी डाउट हो रहा है तो क्यों ऐसा, मतलब आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट मेक सेंस। मतलब आपको कंपेयर करना है ना कि कौन सा ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है स्ट्रक्चर वाइज। ठीक है। तो देखते हैं करके। ठीक है। सो इन ईच ऑफ द आइटम देयर इज अ सेंटेंस, है ना। सो व्हाट डू दे डू इज दे बेसिकली जम्बल इट अप, है ना। यूजुअली आपको कुछ भी सेंटेंस वो लोग दे देंगे। जैसे मैं बोलूं आई, इसको पी कर दिया, एम क्यू कर दिया, गोइंग आर कर दिया, है ना, कुछ भी मतलब एस। ठीक है। सो ये रहा आपका बेसिकली क्या सेंटेंस, है ना। तो कुछ भी आपको पी क्यू आर एस करके दे देंगे, एंड यू आर जस्ट सपोज टू चूज द ऑप्शन विच यू थिंक मेक्स द मोस्ट सेंस आउट ऑफ दोज ऑप्शन। ठीक है। सो विदाउट फर्दर अडू हम लोग क्वेश्चंस को धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। ठीक है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है। Okay, the clerk P left the money on the desk Q in the safe R, which he should have locked up. S. SRQP, QRSP, PQRS or PQSR. सी में मैम Hmm. डी। Hmm. डी।
Come on, guys. I want others to also answer. I'm gonna give more time. So, बताइए. What do you think is the answer? Hmm. Okay, so a lot of answers are like D, 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 D. ठीक है. Yes, so if we basically talk about this sentence, the clerk, we are basically talking about the clerk, obviously. So what did he do? He left the money on the desk. The clerk left the money on the desk. So amongst these options, so if I move forward, left the money on the desk, which he should have locked up in the safe, and the other option would be in the safe, which he should have locked up. So out of these option, obviously जो सबसे ज्यादा सेंस बना रहा है वो आपका डी ही है ना? Because we are basically talking about the clerk left the money on the desk, which he should have locked up in the safe, है ना? तो उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है बेसिकली इस क्लॉज के द्वारा कि ही लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क, जिसको उसको क्या कर देना चाहिए, लॉक अप कर देना चाहिए था इन द सेफ. एनी डाउट एनीवन? तो ये तो काफी कंपेरेटिवली इजी है. तो डी नो वुड बी डाउट द मैम। करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पे चलते हैं. Might hit the market next year. P. According to an engineer, a newly developed air cooler system Q that employed in conventional room coolers are, which is based on a principle radically different from S. SQRP, RSQP, QSRP, or PQRS. सी मैम. मैम सी. Hmm. Hmm. According to ओके, ठीक है, और आंसर्स भी देखते हैं. According to an engineer, a newly developed air cooler system. Yes, so this definitely has to be the subject part. According to an engineer, a newly developed air cooler system, है ना? Because might hit the market next year, that employed in conventional room, which is, so आपको पढ़कर ही पता चल रहा है कि और सब में तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है. So it's actually very easy. According to an engineer, a newly developed air cooler system, which is based on a principle radically different from, right, that employed in conventional room coolers might hit the मार्केट नेक्स्ट ईयर. सो इट्स रियली इजी, क्योंकि हमको सब्जेक्ट पता चल गया तो आगे का तो बहुत ही इजी हो जाता है. हाँ, आगे शुरू से ही पता चल जाएगा वो तो, इसमें तो कोई वो ही नहीं है. बिकॉज ऑल दी अदर ऑप्शन दे कांट बी योर सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट के पार्ट में हो नहीं सकते. सो करेक्ट.
As the situation has changed, comma, since we last discussed this matter, P, it was best to contact you, Q, it appeared to me, R, without losing time, S. PQRS, PRSQ, PRQS, or SPRQ. बी में बी Hmm. आर एस Hmm. Okay. As the situation has changed, QS, P, B. As the situation has changed since we last discussed this matter, it was best to contact you. It appeared to me, है ना? As the situation has changed since we discussed this matter, right? It appeared to me it was best to contact you without losing time. तो ये किधर जा रहा है? सी में ही ना जा रहा है? This P. It appeared to me it was best to contact you without losing time. So बच्चों के क्या आंसर्स हैं? सी बी. बी कैसे आ रहा है कुछ बच्चों का? As the situation has changed since we discussed this matter. एक मिनट. R. It appeared to me without losing time it was best to contact you. ये कैसे हो सकता है? Without losing time it was best to contact. It was. कुछ तो सब्जेक्ट कुछ तो कॉन्टेक्स्ट दो उसको. Is this clear everyone? Any doubt? क्लियर है मैम. क्लियर मैम. Next, चलो next पे चलते हैं. Farmers to smoke their fields during P, keeping in view the prevailing weather conditions Q, agriculture experts have advised are the night to protect vegetables from cold. S. SRPQ, QPRS, SPRQ, and QRPS. बी में मैम डी. Hmm. Okay. वो बीच में ना फिर ड्यूरिंग द नाइट से मैच हो रहा है. डी 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 डी. ओके, ठीक है, सही है. सो काफी बच्चों ने डी आंसर दिया है. किसी और ने कोई और आंसर भी दिया है क्या? नहीं, डी आंसर दिख रहा है. ओके. सो कीपिंग इन व्यू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस. ठीक है, so there should be a comma though, but ठीक है. Keeping in view the prevailing weather condition,
agriculture experts have advised. So what is the advice? Have advised farmers to smoke their fields during the night to protect vegetables from smoke. Sorry, from cold. So absolutely right, guys. This would be the answer. Correct. और ड्यूरिंग और द नाइट कनेक्ट कर दे रहा है ना उसको और हाँ किसी हाँ में हाँ, correct, correct. Very good. Okay. Wait. You all can see the screen, right? Hmm. Mastro appeared to be enjoying every bit of it, P, and followed every composition, the Q, as a thunderous applause from R, an appreciative audience preceded S. P Q S R, R S Q P, P S Q R, or R Q S P. ए मैम Okay. अच्छे से पढ़ो उसको. सी Hmm. A. नहीं देखो यहाँ पे तो कोई सेंस नहीं बन रहा ना. appear to be enjoying every bit of it and followed every composition. ये तो बिल्कुल गलत है. यस मैम बी उसके बाद में एक बी और मैम पी में जाओ. पी एस क्यू आर. रुको. appear to be enjoying every bit of it and appreciating. No, this doesn't make sense at all. पी वाले तो हो ही नहीं सकते. तो अभी खुद देख लो कि कौन सा. बी मैम बी आर. ओके. बी. बी. As a thunderous applause from an appreciative audience preceded Master appeared to be enjoying every bit of it. So if I look at D, RQ as a thunderous applause from, and ये तो हो ही नहीं सकता ना. ये तो बहुत आसान यस है मैम समझना. बी D हो सकता है because D तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा. आप खुद सारे ऑप्शंस को पढ़ के देखो. सो इट्स रियली इजी है ना. तो यस इसमें मैम से यही हो सकता है कि एज अ थंडरस अप्लॉज फ्रॉम एन अप्रिशिएटिव ऑडियंस प्रेसीडेड एज. ठीक है, यहाँ पे हमने एक डिपेंडेंट क्लॉज डाल दिया तो उसके बाद आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगा. ठीक है. मास्टर अपीयर टू बी इंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट एंड फॉलोड एवरी कॉम. नहीं नहीं सॉरी, क्या कर दिया मैंने. आर एस क्यू पी हाँ गलत पढ़ दिया ना. एंड फॉलोड एवरी कॉम्पोजिशन द मास्टर अपीयर टू बी इंजॉइंग एवरी बिट ऑफ इट. हाँ करेक्ट. यस तो मैम आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी होना चाहिए. आउट ऑफ दिस ऑप्शन तो एक ही सेंस बना रहा है और कोई सेंस ही नहीं बना रहा. So यस it's मैम correct. यस मैम Broke his leg, P, fell down, Q, and the small boy who climbed the wall, S. यहाँ पे तो आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का साफ साफ यूज करके पता लगा सकते हो. इट्स रियली इजी. मैम बी P S R Q S Q R P Q एस S क्यू आर R पी P S P R Q. बी है मैम बी बी मैम हम्म. बी हम्म. Okay, the small boy, that is definitely the subject. So I'll have to just see कि SS option कहाँ है क्योंकि fell down, broke his leg, like इसका कुछ context मेरे को मिल नहीं रहा है. So let's see कि अगर ये sense बना रहा है. The small boy who climbed the wall broke his leg. So the small boy who climbed the wall, तो ये इधर है और ये इधर है. तो अगर मैं जाऊं P में, broke his leg and fell down. No, and fell down. That means after that he fell down. So इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि we can just go for B ना, कि the small boy who climbed the wall fell down. So obviously पहले वो गिरेगा तभी ना उसका पैर टूट जाएगा. पहले से कैसे टूट जाएगा. ठीक. तो आपका आंसर हो जाएगा B. राइट. सो आउट ऑफ दिस आई गेस सबको तो ये सही होना चाहिए क्योंकि बहुत इजी है ये तो.
चलो सही है। Next question. Therefore, you must listen carefully, P, what the speaker has said, Q. In order to understand R, the statement will be made just once. SPRQ, SRQP, RSPQ, or SPQR. Hmm. ए मैम। Hmm. A, ma'am. Just, just, Okay. So it is clearly, talking about that how यहाँ पे therefore आ गया तो it can't be my subject तो ये तो ऑप्शन में दिया भी नहीं है ठीक है so what the speaker has said so definitely ये भी नहीं हो सकता in order to understand अभी ये भी नहीं हो सकता so let's start with this S so the statement will be made just once right therefore you must listen carefully so SP है ना so out of this option आपका आंसर obviously A हो जाएगा the statement will be made just once therefore you must listen carefully right in order to understand what the speaker has said so absolutely correct guys और किसी की ना साइड से कॉन्स्टेंटली आवाज आ रही है आई डोंट नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम लेट मी चेक अब नहीं आ रही होगी अब नहीं आ रही प्लीज चेक योर माइक्रोफोन्स ये चेक करते रहा करो कि ऑन तो नहीं छोड़ दिया has been below normal last week P. The minimum temperature Q in some part of the city R when the rain and hailstorm activity recorded S. RSPQ, SPRQ, QPSR or PSQR. बी मैम। Hmm. बी मैम। Okay. B. मैम सी। The minimum temperature. अच्छा एक तो B बोला एक C. When rain and hailstorm activity recorded has been क्या ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा when rain and hailstorm activity recorded has been below normal since last week in some part of the city the minimum temperature guys ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है कौन सा स्ट्रक्चर चलो अभी इसको देखते हैं द मिनिमम टेम्परेचर ओके दिस सीम्स लाइक कि यहाँ पे कुछ हो सकता है ठीक है तो आगे देखते हैं द मिनिमम टेम्परेचर हैज बीन बिलो नॉर्मल ओके हैज बीन बिलो अभी यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिख तो रहा है कि कहीं कुछ प्रोग्रेस हो रहा है द मिनिमम टेम्परेचर हैज बीन बिलो नॉर्मल सिंस लास्ट वीक है ना उसके बाद when rain and hailstorm activity recorded in some part of the city is this clear
बी में तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। यस यस मैम अभी क्लियर। भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। स्ट्रक्चर बनना बहुत जरूरी है। A hailstorm activity in the evenings P. There is a possibility of Q while there could be R heavy rain towards the weekend. SQPR, QSRP, QRPS, SPRQ. डी मैम। Okay. This one is really easy. बी होगा। Heavy rain towards the weekend. There is a possibility of a hailstorm activity in the evening while there could be. यहाँ पे कुछ तो चाहिए ना। देयर कुड बी व्हाट, तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद अगर मैं बात करूं एस पी, हैवी रेन टुवर्ड द वीकेंड, अ हेल स्टॉर्म एक्टिविटी इन द इवनिंग while there could be, there is a possibility of, एस एस वालों को तो आप बिल्कुल कंसिडर ही मत करो, दे डोंट इवन मेक सेंस, खुद पढ़ के देखो उसको। तो ए और डी गया। तो आंसर आपका किसमें से हो सकता है, या तो बी में हो सकता है या तो सी में हो सकता है। अब अगर हम देखें देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट, देखते हैं किसकी बात हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ heavy rain और while there could be, there's a possibility of while there could be heavy rain, ऐसे तो हम नहीं बोलते ना इंग्लिश में। so there's a possibility of heavy rain towards the weekend while, है ना, while a hailstorm activity in the evening। तो दो डिफरेंट चीजों की हम लोग बात करें तो while एज अ कंजंक्शन यूज करके आपका आंसर यही होना चाहिए। ठीक है। The company are often asked P. The formal or informal interview Q. Employees who are leaving R for their opinions during S. RPSQ, RQPS, PSQR, PQSR. डी मैम। डी क्यू एस आर। Hmm. The company are often asked. Okay. ए होगा। The company are often, अच्छा ये the company are often asked for their opinion during A, ma'am. A. Yes, ma'am. during the formal. Why would we ask about company's opinion? कंपनी के ओपिनियन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो वो तो नहीं हो सकते, है ना। सो आउट ऑफ दीज आर आंसर कैन बी दिस ना, दैट एम्प्लॉइज हु आर लीविंग, है ना, एम्प्लॉइज हु आर लीविंग द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड, यही जा रहा है ना इसमें। द एम्प्लॉइज हु आर लीविंग द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड फॉर देयर ओपिनियन, है ना, during the formal or informal interviews, right? So out of these our answer can only be, क्या नहीं समझ आ रहा, मतलब आप मुझे बताओ कि आपको क्या, मतलब क्या लग रहा है कि क्या आंसर हो सकता है जिसकी वजह से आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो। तब तो आई कैन, मतलब ओके लेट्स लुक एट अदर पता ऑप्शंस। नहीं कब। चलो और ऑप्शन को भी देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, अगर मैं सेकंड ऑप्शन पे जाती हूँ, सेकंड ऑप्शन में लिखा है employees who are leaving द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यूज। ठीक है, मतलब ठीक है, इतने तक भी कर सकते, मतलब जो लीव कर रहे हैं फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल इंटरव्यूज को, द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड फॉर देयर ओपिनियन ड्यूरिंग व्हाट, डजंट इवन मेक सेंस, ड्यूरिंग व्हाट, तो कुछ तो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, पूरा पढ़ के देखोगे, स्ट्राइक इट आउट। चलो अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं। सी पे अगर मैं देखूं तो बोल रहा है द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड, ठीक है, फॉर देयर ओपिनियन ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग
The formal or informal interviews, employees who are leaving के आगे अगर आपको ऐसा कुछ अपने क्लॉज या फिर बोलते ना रिलेटिव प्रोनाउन या कुछ देते तो कुछ कॉन्टेक्स्ट देते ना ओमकार, ये हमने पढ़ा भी था, तो यहाँ पे हु आर लिविंग के आगे आपको लगता नहीं कुछ आना चाहिए? हु आर लिविंग शुड बी ब्ला ब्ला ब्ला। अगर मैं ऐसा बोलूं ओमकार हु आर लिविंग, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे लिविंग व्हाट मैम, कुछ बताओ तो सही क्या बोलना चाह रही हो आप। तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद अगर मैं लास्ट की बात करूं, लास्ट में क्या दिया है? पी क्यू एस आर में मैं जाऊं, द कंपनी आर ऑफन आस्क्ड द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यू, दे आर आस्क्ड द फॉर्मल और इनफॉर्मल इंटरव्यू फॉर देयर ओपिनियन ड्यूरिंग एम्प्लॉयज वाली, ये तो बिल्कुल ही मतलब कुछ सेंस ही नहीं है। क्या है ये? तो बिना सर पैर का ऑप्शन है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझे पर्टिकुलरली आप पूछ सकते हो, बाकी तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे काफी क्लियर है वैसे। हाँ मतलब थोड़ा सर बनाओ, कभी सर नहीं बन रहा तो पैर बना लो, वो बहुत जरूरी होता है। आपको कोई ऑप्शन पढ़ के लग रहा है यार ये तो कोई सर पैर ही नहीं बन रहा है, तो क्या क्या ऑप्शन, तो वो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। And development on the other affects P. The difference in the relationship between death and birth rates on the one hand Q, but the age structure of population R, not just the rate of population growth S. SRQP, QPSR, SPQR or QRSP. बी मैम, QPSR। Okay. दिस वन इज रियली इजी बिकॉज एट फर्स्ट ग्लैंस आपको पता चलना चाहिए कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ऑलरेडी बट दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ये जहां पे भी ये दिया है ये दिया है, ये हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। कंजंक्शन कंजंक्शन गायब, नॉट भी नहीं हो सकता। नॉट जस्ट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो हम लोग देखते हैं कहाँ पे दिया है क्यू। क्यू दिया है इधर और इधर। तो अगर मैं जाऊं बात करूं, द डिफरेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन डेथ एंड बर्थ रेट ऑन द वन हैंड, है ना, बट द एज स्ट्रक्चर ऑफ, तो ये तो क्या बात हो रही है यहाँ पे? इन्होंने बोला ऑन वन हैंड, सो आई वुड नीड द अदर एस्पेक्ट या अदर हैंड ना। सो एंड द डेवलपमेंट ऑन द अदर इफेक्ट्स, तो आपको यहाँ पे साफ साफ पता चल जाए कि क्यूपीएसआर ही हो सकता है। ठीक है, so the difference in the relationship between death and birth rate on the one hand and development on the other, right, affects not just the rate of population growth but the age structure of the population. So साफ सी बात है, आपका आंसर हो जाएगा बी। So very good guys, absolutely correct. Stressful or joyful P, with the belief of evanescence of life itself Q. It is necessary to rise above the situations R, and in the philosophical quest of purpose of life S. RPQS, QSRP, RSQP or QPRS. डी मैम, Okay. Stressful or joyful? QSRP। Okay. अच्छा, P तो ठीक है, तो हमको सिर्फ ए R और Q दिया है। मैम ए ए Okay. It is necessary to rise above the situations, मैम सी stressful or joyful. It is necessary to rise above the situation and in the philosophical quest of purpose of life. हाँ,
इतना सेंस तो बन नहीं रहा है। एक मिनट, आगे क्या जा रहा है फिर? क्या एंड इन द फिलोसफिकल क्वेस्ट ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ विद द बिलीफ ऑफ एवनेसेंस ऑफ लाइफ इटसेल्फ स्ट्रेसफुल हो जाए? नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। ये तो साफ सी मैम बात है। यही है, हम्म यही होना हाँ, होगा। इस पे शुरू हुआ है, इस पे पता हूँ। It is necessary to rise above the situations, stressful or joyful, right? एक मिनट, it is, हाँ, with the belief in the evanescence of life itself and in the क्यू philosophical और quest. एस क्योंकि दोनों साथ में ही हैं हमारे। हाँ, so यही पूरा पढ़िए भैया, पूरा पढ़ोगे तभी तो समझ आएगा। हमारे कुछ पे से छोड़ो थोड़ा सा मत। बन गया था ना आइडिया, वो सिचुएशन स्ट्रेसफुल और जॉयफुल वाले में। हम्म क्यों तो हो ही नहीं सकता। चलो, यार ये माइक बंद कर दो प्लीज। okay. Glacier feeding the Ganga may melt before the end of the 21st P century because of climatic changes Q caused by man-made carbon dioxide emission R. Scientists carrying out a study have warned that an ancient SRQP, QPSR, SPQR or QRSP. सी मैम, एस पे क्यों? सी में एमसी। सी होगा। क्यू में क्या दिया है? सेंचुरी बिकॉज क्यू तो गायब, मतलब क्यू तो हो क्या है ये? सेंचुरी बिकॉज ऑफ, मतलब दैट मीन्स समथिंग इज बिफोर इट। तो हम जाएंगे फिर एस वाले ऑप्शन में। साइंटिस्ट कैरिंग आउट अ स्टडी हैव वार्न्ड दैट एन एंशिएंट व्हाट? एंशिएंट ग्लेशियर। हम्म 21st सेंचुरी मिला के ना, पी के बाद क्यू आना चाहिए मेरे हिसाब से। एंशिएंट कॉज्ड बाय, ये भी नहीं हो सकता। एंशिएंट कॉज्ड, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना? तो पी हो सकता है। साइंटिस्ट कैरिंग आउट अ स्टडी हैव वार्न्ड दैट एन एंशिएंट, so this is working as an adjective. We need a what? We need a noun for it. So glacier feeding the Ganga may melt before the end of 21st. तो आगे तो क्या होगा? Century हो सकता है because of climatic changing caused by man-made carbon dioxide emission. So this would be the answer. So absolutely correct, guys. Very good. Next पे चलते हैं. From different walks of life as human rights P, so much is written by so many persons Q, there are very few subjects in our contemporary times on which S. QSRP, RPQS, QPRS, RSQP. डी मैम, आर एस डी क्यू होगा। पी। Hmm. डी। डी होगा मैम। There are सब्जेक्ट्स very few इन subjects. कंटेम्परेरी टाइम। सब्जेक्ट इनके There, साथ क्योंकि कंटेम्परेरी टाइम से जाएगा मैम। there are very few subjects in डी होगा from मैम। different, ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो साफ सी बात है। हम्म, एंड चलो इसको भी देख लेते हैं। सो मच इज रिटन बाय सो मेनी पर्सन्स from different walks of life as human rights. There are very few subjects, नहीं। So हाँ, सही बोल रहे हो आप कि RSQP होगा, right? So this will be, there are very few subjects in contemporary times on which सो so मच much is रिटर्न। written by so many persons from different walks of life as human rights. So सबका आंसर सही है ना? दामिनी जी, आपका बी कैसे जा रहा है? कुछ लोगों का बी क्यों जा रहा है? RPSQQS RP contemporary times on which from different walks of guys, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कैसे तुम लोग ये आंसर दे रहे हो? आंसर इज डी।
On the contrary, in countries like China and the other Pacific countries, P. Permission for shooting but also Q. Filmmakers not only obtain quick R get subsidies to undertake the job as PRQS, QSPR, PSQR or QRPS. मैम ए होना चाहिए क्योंकि आर हम्म के साथ सिर्फ क्यू ही ये जाएगा होगा मैम, फिल्म मेकर्स नॉट ओनली ऑब्टेन नॉट क्विक ओनली बट परमिशन फॉर ऑल्सो। शूट बट आल्सो ये होगा। यस मैम, ए होगा, आर के बाद क्यों फिर एस। A. यस On मैम the contrary, in countries like China and the other Pacific countries, permission फिल्म for मेकर, shooting. नहीं नहीं नहीं, अच्छा फिल्म अच्छा मेकर। फिल्म एक मेकर्स नॉट मिनट ओनली for the Pacific country filmmakers not only obtain quick permission for shooting but also get subsidies to undertake the job. Okay. यस मैम, ये लास्ट के 3 अच्छे से मैच हो रहा है ना। अच्छा R तो है ही नहीं ना तो हाँ ठीक है. Q क्या है? Q permission for shooting हाँ ये तो हो ही नहीं सकता. Q वाला तो बिल्कुल गया. तो P के साथ और कौन सा है? आप लोगों ने क्या बोला? A ना और उसके बाद यस मैम, PS ए। है. On the contrary, in countries like China and other Pacific countries, get subsidies to undertake the job. नहीं, ये तो नहीं जा रहा है. हाँ, R ही, सॉरी, A ही जाएगा. PRQS. C तो नहीं जा सकता. C आपका कैसे जा रहा है? सी नहीं होगा मैम, पहले नोट ओनली, उसके बाद में बट ऑल्सो आएगा ना, तो आर के बाद हाँ, क्यू वो होगा। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये आंसर नहीं हो सकता. क्विक के साथ सिर्फ परमिशन ही जा सकता है कुछ नहीं जा सकता हाँ, ये क्विक बोल रहे परमिशन, हैं सब्सिडीज क्विक भी नहीं आएगा। परमिशन हाँ Centuries show that the June rainfall is P of a drought, India's rainfall data for over a Q, while the recent rain may have soothed concerns are no predictor of the monsoon's outcome as PSRQ, RQPS, PQRS, and RSPQ. ए मैम, PSRQ। Okay. एक मिनट. बी। यस मैम, बी। बी मैम, वेट करते हैं और बी. हाँ, वही ओवर है, सेंचुरी से मैच हो रहा है ना वो। उसी के बस वही मैच हो रहा है और कंसर्न काय कर ड्रॉट का कंसर्न और किसी चीज का कंसर्न दिखाया ही नहीं So, yes, correct. So, if we look at the answer, so we can see right here RQPS. So, आप लोग देख सकते हो, while the recent rain may have soothed concerns, ठीक है? उसके बाद आपका आएगा of a drought. India's rainfall data for over a year, for पूरा over, सेंचुरी for over a century show that the June rainfall is no predictor of the monsoon's outcome. So absolutely correct, guys. Very good. Next पे चलते हैं. Against the officer P, reasons for the accusation Q, there should have been R, who was in charge at the same time S. तो S तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. R P S Q R Q P S P Q R S S P R Q. बी। बी मैम, RQPS। यस मैम, बी। बी मैम, There should have been against the officer reason for the accusation. There is no context there, so there should have been
Reason for the accusation है ना against the officer who was in charge at the time. So this one is really easy. So absolutely correct. Our answer would be B. Very good. So that is the clear subject that we have here. Correct. Several of our food P are being extensively cultivated Q, and vegetable crops are hybrid varieties of S QRSP, SPQR, QPRS, SPRQ. B मैम, मैम डी। SPQR मैम B। देखो सब्जेक्ट तो यही हो सकता है आर बीइंग बी एक्सटेंसिवली मैम कल्टिवेटेड क्यों तो नहीं हो Hybrid सकता varieties of मैम डी होगा। several of our food and vegetable are हाइब्रिड being वैरायटी extensively ऑफ cultivated. हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सेवरल ऑफ आर देखो बहुत इजी हो गया क्योंकि यहाँ पे भी ऑलरेडी नो कि एसपी क्या है उसके बाद यू जस्ट हैव टू फाइंड सेवरल ऑफ आर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स है ना Yes, are ma'am. being extensively cultivated because food and Cultivated. vegetables so it's clear कि उसके साथ कुछ and ही आ सकता है ठीक है and बाद में नहीं आएगा so correct D होगा मैम. Yes मैम. B कहाँ से दे रहे हो भैया तुम hybrid variety of several of our food are being extensively cultivated and vegetable crops we are talking about food and vegetable crops ना उसके बाद उनके बारे में आप बता रहे हो are being extensively cultivated I guess आपने ऑप्शन अच्छे से पढ़ा नहीं मिस्टेक टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है okay in modern societies P or merely suppressed Q has class conflict or has been resolved S RPSQ RSPQ PRSQ QRSP C मैम hmm. डी। PRSP। Hmm. Societies and एक मिनट मैम ऑप्शन नहीं. option A has class concept Conflict. has class conflict in modern society been resolved or merely yes it because it is definitely kind of a question that we have Questioning. सी कैसे तुम लोग किए हो in modern society in modern societies has class conflict been resolved or merely suppressed no has class conflict A is the answer. Humans and machines have coexisted P Ma'am, dating back to huh? ma'am, but how you start with like has? So is it right way in the previous question, in the previous one? Yes, definitely. So see, if you are asking like kind of जैसे कि हम लोग usually क्या करते हैं if we want to ask some kind of question ठीक है or if we want to emphasize on something. So for example, if I say to all of you, has the world really changed? Or if I want to focus on any topic, so definitely we can start with has. Because see, when it comes to these kind of questions, Deepak, we are not necessarily focusing on punctuation. So I guess you are confused because there's no punctuation there. ठीक है? So इसलिए humans and machines have coexisted P dating back to the invention of Q.
The potter's wheel in ancient Mesopotamia are at the physical level for millennia S. RSPQ, QSPR, QRPS, PSQR. Mhm. Hmm. मैम डी D मैम PSQR. पीएस तो साथ में ही आएंगे तो Okay, so if I look at Q, dating back to the invention of the potter's wheel in ancient Mesopotamia, humans and machines have coexisted at a physical level. It doesn't make any sense. जो दूसरा स्ट्रक्चर है आपका उसका कुछ भी सेंस नहीं बन रहा है, तो we will only look at जहां पे आपको क्या मिल रहा है P. Humans and machines have coexisted dating back to the in एक मिनट मैम एस वाला ना डी एट द फिजिकल हाँ सॉरी मैंने humans and machines have coexisted at the physical level for millennia dating back to the invention of what the potter's wheel. So obvious सी बात है हम किसी invention की बात करें तो we'll have to invention of potter wheel. तो उस हिसाब से आपका क्या आंसर हो जाएगा? Our answer would be D. Is it clear? तो आपका आंसर D होना चाहिए. C कहाँ से आ रहे तुम लोग का आंसर? D होना चाहिए ना? Without any mandate of law P, the plea filed through the advocate Q online is illegal and are submitted that the sale of drugs and prescription medicines as RQSP, QSRP, QRSP or PRSQ. Without any P is not PR. Without any mandate of law, online is illegal and so this C मैम. cannot be your option. ये तो नहीं होगा. Online is illegal and C मैम. hmm, सी अरे QRSP सी hmm. C. नहीं मैम बी 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 लग रहा है. The plea filed through the advocate QSRP submitted that the sale उसके बाद R भी है ना advocate online is illegal. Okay, the plea filed with the advocate submitted that the sale of drug and prescription medicine without any mandate of law. एक मिनट मैंने गलत पढ़ दिया क्या? कौन सा यस मैम. यहाँ से पढ़ना था ना मेरे को. ये किधर है फिर? ये इधर है. क्यू एस clear fund through the advocate. फिर online is illegal and एक मिनट. मैम बी वाला पढ़ लीजिए पहले एक बार ना मतलब. The plea filed through the advocate submitted that the sale of drugs and prescription medicine online is illegal and without any mandate of law. Plea filed through the advocate मैम पहले online आंसर is दिखा दीजिए. and QSP होगा QSRP. the plea filed through the advocate
हाँ यही हो सकता है। यही है मैम, वही वाला बना रहा हूँ विदाउट मैं। एनी मैंडेड लॉ वैसे भी सबसे लास्ट में आएगा, तो फिर उससे हाँ, और पहले वो ना तो होना चाहिए। और उसमें भी ना जो सेल जो दिखा रहा है वो ऑनलाइन वाला, वो भी तो मैच हो ऑनलाइन रहा है ना। ऑनलाइन हाँ, इज इलीगल प्रिस्क्रिप्शन and ऑनलाइन। submitted. विदाउट Online एनी is मैंडेड लॉ। submitted that the sale of drug prescription medicine without any मेडिसिन सेल जो mandate. है वो ऑनलाइन इलीगल हाँ दिखा रहा है। मेडिसिन करेक्ट, प्रिस्क्रिप्शन ऑनलाइन ही यही होना बेचना चाहिए। चाहिए, इलीगल है। एस के बाद पी आएगा। हाउ? इसके बाद आर आएगा, आर आएगा आर, और मेडिसिन ई आएगा। ऑनलाइन इज इलीगल। ये सी कहाँ देखो से आ ना गया? कि सेल ऑफ ड्रग्स और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन जो है वो ऑनलाइन इलीगल है देना, इलीगल है, हाँ तो वही इस उसी वजह से। से एस के बाद आएगा। एक मिनट। Where you don't know the local language P and see how your Q travel to a foreign country, even a region of India R, hands and expression do the talking S. SQPR, RPQS, SPQR, RQPS. This one is really easy. I mean, pretty easy. Where you don't know the language. So हमको फोकस करना है S पे और R पे. So when I look at options, सी आर मैम। आएगा ना प्रॉब्लम, hands and expression do the talking. आर के बाद पी आना चाहिए। मैम बी S तो नहीं हो सकता, एक मिनट। S बी हो बी गया। बी मैम बी होगा। travel to a foreign country, even a region of India, and see how your नहीं, पी बहुत पढ़ो, पी मैम बी वाला, हाँ बी। पी पढ़ो, वेयर यू डोंट नो द लैंग्वेज। ऐसी जगह travel पे to a ट्रेवल foreign करना country. जहाँ पे Hmm, आपको लैंग्वेज नहीं आती। and see how your very, हाँ तो ये तो नहीं हो सकता। see how, ये तो गया। So where you don't know the local language and see how your hands and expression do the talking, है ना? तो उसके बाद तो वही आ सकता है। हाँ तो यस सबका मैम। आंसर ही तो सही है, करेक्ट। मैम एक बार चलो फिर से बता दीजिए। देखो, यहाँ पे ना बेसिकली बात की गई है कि आप ट्रैवल करो टू द फॉरेन कंट्री, ठीक है? इवन अगर आप किसी इंडिया के रीजन में भी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, यहाँ पे जो आपका आर में ये है और ये है, तो उसके बाद आपको सिर्फ यही डिसाइड करना है कि या तो वो पी हो सकता है या तो वो क्यू हो सकता है। तो अगर मैं पहले क्यू को देखती हूँ, ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री इवन अ रीजन ऑफ इंडिया एंड सी हाउ योर वेयर यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना, ठीक है? एंड सी हाउ योर वेयर यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज, ठीक है? तो आप इसका स्ट्रक्चर देखो ओमकार, बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा है। उसके बाद खुद पढ़ के देखो, फिर भी डाउट है तो मैं आपको पूरा हिंदी में बताऊंगी। ओके मैम। आ गया मैम उसको। चलो, वी आर ऑलमोस्ट डन नाउ। इट इज ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ इट्स P. It shows India means business. Q. Sovereignty and elements that threaten it are, while it is for transparent and open ties. It is also conscious of it. So it is also conscious of it. तो ये तो हो ही नहीं सकता। P बिल्कुल गया। So that means they have spoken of something else before it. So मैं देखूंगी Q को। So it shows India means business. Okay. Sovereignty and elements that threaten it. It is also conscious of it while it is transparent. ए मैम। That ए means it is ऑप्शन also मैम। conscious of it. It's conscious of something, na? We need something. इट्स सोवरेनिटी एंड एलिमेंट्स सोवेरेनिटी एंड दैट थ्रेटन एलिमेंट्स। हाँ, तो वही वो के मेरे बाद को कहाँ कॉमा पे है तो मिल फिर रहा है? वही है। इट। अरे ये क्या कर दिया मैंने? मैम आंसर दिखा रहे हो क्या आप? सॉरी, मैं ये रहा आंसर आप लोगों का। So यही है ना ओके आंसर। मैम। It shows India means business, right? While it is for transparent and open ties, ठीक है? But it is also conscious of its sovereignty and elements that threaten it, इंटरनेट। ठीक है? यस मैम। तो वो यस मैम। कॉन्ट्रास्ट हमको दिख रहा है इस पूरी सेंटेंस के थ्रू। सो करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं।
To ride the next big outsourcing wave, P, having achieved success in software exports and informing technology areas, Q, this time in manufacturing from the USR, Indian manufacturer exporters are well equipped, S, PSQR, QRPS, PRQS, QSPR. Having B, ma'am. QR2. okay. Having achieved success in software exports in Indian Q R. पी से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता ना. हाँ तो इसी में से है having achieved success in software export and information technology areas, Indian manufacturer exporters are well equipped this time in manufacturing from the US to ride the next big outsourcing wave. So ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? Then D. QS एक मिनट PR. QSPR. QSPR, मैम. Okay, किस let's चीज read के it. लिए equipped है मैम? Having achieved success in software export and information technology areas. तो इसके बाद नेक्स्ट किस में आ रहा है? D होगा ना. Manufacturer exporters are well equipped, है ना? To ride the next big outsourcing wave. This time in manufacturing from the US. हाँ, correct. Yes, ma'am. चलो next question. ये आपका previous year का question है. For an RP, because it had to wait queue due to dense fog R, the plane couldn't take off. I would say question काफी easy आते हैं ordering of words के exam में तो PQRS, RQPS, O, it should be Q. QPRS, मैम B होगा. Q2. SPQR. Take off. The focus is definitely on the plane couldn't take off, so now we have to give a reason. The plane couldn't take off due Because to it had dense to fog. be. हाँ एक मिनट तो ये किधर है एस एस यही है SPQR. D वाला. because it had to wait due to dense fog. Dense fog. हाँ it's always better कि आप सारे ऑप्शन को देख लो नहीं तो फिर कंफ्यूजन होने लग जाती है आप कुछ और ही सेंटेंस बना देते हो जो मैंने अभी किया तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप पूरा ऑप्शंस को देखो तो आपका टाइम भी बचेगा उसकी वजह से Yes, ma'am. हाँ ठीक है guys so all of you did well pretty well so next class we'll be doing another class of ordering of words which will be class 2 where I'll see all of you so if anyone has any question right now they can ask or I'll see all of you in the next class yes princess is there I guess no princess is not there Degree than the pretty. what Ma'am, वो last superlative degree is pretty There is no other. I mean, what I want to say, what I want to convey is there is no other word to convey more than superlative degree than the pretty. I don't exactly understand your question. I guess you are trying Write to whatever say. you want to say. That would be pretty convenient. No, so are you trying to say that is there no better way to express that somebody is pretty, or like are you talking about superlative degree of pretty? Yes, ma'am, superlative degree. So we say prettiest, na? She is the prettiest. The prettiest. Because superlative may we need an article, the, na? Pretty, more pretty, no, not prettiest. Yes. She's the prettiest. I've already used the, so I wouldn't necessarily use to, need to use that. Mm. Any other question you have? No, ma'am, no. Why? Okay, fine, okay. Okay, fine. Actually, it's not a question, ma'am, but I just have a doubt about
I mean, Okay, fine. in the I mean, yes. See, superlative degree is anyway the highest degree, na? So there is no, I would say, other degree which can surpass it in any way. So that is the only degree we have, Venkatesh. Okay. Maybe we can think of another degree for you if you are concerned. Uh, Actually, okay. Any other question, Venkatesh? No, ma'am. Okay, fine. Okay, guys. So I'll see all of you in the next class. तब तक के लिए take care of